Hello students, now today we discuss the question number 5 of exercise 10.4. Three girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throw a ball to Salma and Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Salma and Mandeep is 6 meter each, Salma and Mandeep, Mandeep and Salma and Mandeep, and Reshma and Salma. रेशमा और सलमा और मंदीप, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर है. तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदीप? रेशमा और मंदीप के बीच की डिस्टेंस जो है कितनी होगी? ये एक सर्किल है जो पार्क में बना हुआ है. यहाँ पर आपका रेशमा, यहाँ पे सलमा और यहाँ पर मंदीप और रेशमा. ये है सलमा. ये सेंटर, सर्किल का सेंटर है O. ध्यान से सुने. Three girls are standing on a circular path. They are throwing a ball to each other. The distance between them, Reshma and Salma, Salma and Mandeep, is 6 meter. What is the distance between Reshma and Mandeep? Let the Reshma, Salma and Mandeep be represented by R, S and M. R, S and M. Now the radius of circle is 5 meter and the distance is 6 meter. Draw a perpendicular line L and K. Clear? OL perpendicular to RS and OK perpendicular to RM. OK perpendicular to RM. OR triangle ORL, OR square equal to OL square plus RL square. 5 square OL square 3 square. 25 minus 9 equal to
OL square, 16 equal to OL square and OL equal to 4. OL equal to 4. यहाँ से O और L के बीच की डिस्टेंस आपकी निकल गई 4 है। अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक बार हम बेस को RS लेंगे, हाइट OL को। दूसरी बार बेस को OS लेंगे और हाइट RK होगी। क्लियर है? नाउ द रेडियस, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS 1/2 OS into RK, OS into RK, and area of triangle ORS 1/2 RS into OL। देखो ये दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल के हैं। जब दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल के हैं तो इन दोनों की एरिया इक्वल होगी। इन दोनों की एरिया क्या होगी? इक्वल होगी। और जब दोनों की एरिया इक्वल होगी तो देयरफॉर 1/2 OS 5 into KR 1/2 RS 6 into 4 1/2 से कैंसिल and KR equal to 24/5 4.9 meter and RM equal to twice KR, that 2 into 4.8 9.6 meter, 9.6 meter. This is the distance between Resma and Mandeep. This is the distance between Resma and Mandeep. Clear? Next. Last question of this exercise. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, 3 boys, Ankur, Sayyad and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. ये अंकुर
सैयद और डेविड। ये जो है अंकुर, सैयद और डेविड एक सर्कुलर पार्क में बाउंड्री पर बैठे हैं। अंकुर, सैयद और डेविड रिप्रेजेंटेड बाय A, S and D. The distance between them X and X. Clear? In triangle OPD, triangle OPD, OP square equal to OD square minus PD square. Radius is 20 square minus X square and 400 minus X square. That's equal to OP square and OP equal to under root 400 minus X square. Now AP equal to 3 under root 400 minus X square. AO equal to twice under root 400 minus X square. AP, QD and SR are the median of a triangle. Median of a triangle. Then the median of triangle intersect each other at the point O. O is the centroid of triangle and the centroid divide the median into 2:1 on the basis of that. So AO equal to 2 under root 400 minus X square. Clear? In triangle APD AD square equal to AP square plus PD square. 2x square equal to 3 under root 400 minus x square whole square plus x square. 4x square equal to 9 400 minus x square plus x square and 3 x square equal to 3600 minus 9x square and 12x square equal to 3600 x square equal to 300 and x equal to 10 under root 3. X is equal to 10 under root 3. So AD equal to 2x 20 under root 3 meter. So therefore
the distance between Ankur Sayyad David and David Ankur are 20 under root 3. Clear? Thank you.